Handling errors. An error is a condition that causes a disruption in the execution of a program. भी हम जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग लिखते हैं अपने, तो उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। हमारे दो टाइप के एरर होते हैं। एक एरर तो वो होता है जो हम कोडिंग में लिखते समय कर देते हैं, या फिर कभी सेमीकोलन नहीं लिखा, कभी ब्रेसिस रह गया, कोई मिस हो गया, तो वो तो एरर है। और एक दूसरा एरर होता है जैसे हम कोई कोडिंग करी हमने यूज़र से इनपुट के लिए कि 1 से लेके 5 तक कोई एक इनपुट देना यूज़र को, लेकिन उसने दे दिया 6, तो ये एक एजम्पशन है, एक्सेप्शन है ये एक, तो ये भी एक एरर में ही आता है। तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम, वही चीज़ पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। An error can be a result of circumstances such as incorrect code or insufficient memory resources. Errors in a Java program are categorized into two types: compile time errors and runtime errors. The compile time errors occurs when the syntax of a programming language are not followed. जो हम कोड लिखते समय में गलती करते हैं वो compile time errors में आते हैं। For example, in Java, if you use a keyword name as a variable name, a compile time error will be raised by the compiler. हम वेरिएबल नेम में कीवर्ड नहीं लिख सकते, तो ये एक कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। द रन टाइम एरर्स वो होता है जब हम यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं और वो कुछ गलत इनपुट दे देता है, तो वो रन टाइम एरर्स में आता है। द रन टाइम एरर्स ऑकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रोग्राम रन्स आउट ऑफ मेमोरी, it results in a runtime error. Such an error is known as an exception. An exception can lead to the termination of an application. Dealing with such abnormal behavior is called exception handling. In addition, to create an error-free code, you need to validate the program. In order to validate the program, you need to test various assumptions. For this, Java provides assertions. This chapter in this video we discusses the common methods that you can use to handle exceptions. In addition, it also discusses the use of assertions in Java. In this video we will learn to handle exceptions. Handling exceptions in the classic jumble word game. अब हमारे पास एक गेम है classic jumble word game. If the player enters an incorrect menu options such as a string value instead of an integer value, the game terminates abnormally. अब उस गेम में हमने यूज़र से बोला कि आप इंटीजर वैल्यू डालिए, लेकिन उसने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी गलती से, तो गेम टर्मिनेट्स एबनॉर्मली। तो गेम एबनॉर्मली टर्मिनेट करेगा। द एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ एन एप्लीकेशन कैन हैव सेवर कॉन्सिक्वेंसेज इन अ रियल टाइम और अ बिजनेस एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स a vital functionality to an organization. Therefore, it is essential to handle and prevent the abnormal termination. अब abnormal termination के लिए हमें handle करना पड़ेगा कि abnormal termination ना हो. In order to prevent the abnormal termination in the classic jumble word game, Sam wants to implement a functionality such that the game application displays an appropriate message whenever an abnormal termination occurs. अब एक Sam नाम का बंदा है, उसे एक ऐसा फंक्शन डालना है उसमें गेम में कि अगर जो यूज़र है वो गलत इनपुट दे तो सिर्फ एक सिंपल मैसेज प्रिंट होके आ जाए उसके सामने कि आपने गलत इनपुट दिया है, सही इनपुट डालिए। टू कैटर टू द प्रोसीडिंग रिक्वायरमेंट, सैम शुड इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके लिए सैम को एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। द टर्म एक्सेप्शन इन जावा इंडिकेट्स एन एबनॉर्मल इवेंट दैट ऑकर्स during the program execution and disrupts the normal flow of instruction. For example, if you divide a number by 0, ये भी एक exception है, or open a file that does not exist, an exception is raised. In Java, exceptions can be handled either by the Java runtime system or via user-defined code. Java supports various built-in classes and exception handler to deal with exceptions. अब Java हमें प्रोवाइड करता है कि हम इस एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकें। तो हम कैसे हैंडल करेंगे वही देखेंगे हम इस वीडियो में। Exploring exceptions. When a runtime error occurs, an exception is thrown by the JVM, that is Java Virtual Machine.
which can be handled by an appropriate exception handler. The Java runtime system proceeds with the normal execution of the program after an exception is handled. If no appropriate exception handler is found by the JVM, the program is terminated. Normally, there are several built-in exceptions that have been identified in Java. In order to deal with these exceptions, Java has various built-in exception classes. First is the throwable class. The throwable class is the base class of exceptions in Java. You can throw only those exception objects that are derived from the throwable class. The following into two classes are derived for the throwable class. First is exception and second is error. The exception class represents the condition that a program should handle. The exception class has various subclasses such as a class not found exception, illegal access exception and runtime exception. क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का मतलब है कि हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें मेन मेथड में, लेकिन वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हमारे कोड में. इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन है कि हमने किसी प्राइवेट क्लास को किसी और दूसरी क्लास में एक्सेस करने की कोशिश करी, उसे इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन कहेंगे. रन टाइम एक्सेप्शन. द क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज थ्रोन when a class is being referred but no definition for the same is found. The illegal access exception is thrown when a particular method is not found or private हो method इसलिए. The error class. The error class defines the exceptions related to the Java runtime environment. For example, out of memory error is an error that occurs when there is insufficient system memory to execute a program. Identifying checked and unchecked exceptions. Java exceptions are categorized into the following types: checked exceptions and unchecked exceptions. Checked exceptions. These are the invalid conditions that occurs in a Java program due to the problems such as accessing a file that does not exist or referring a class that does not exist. The checked exceptions are the object of the exception class or any of its subclasses, excluding the runtime exception and error class. For example, a checked exception IO exception is raised when a program tries to read from a file that does not exist. The checked exceptions make it mandatory for a programmer to handle them. If a checked exception is not handled, then a compile time error occurs. There is some commonly used checked exceptions. Class not found exception is thrown when the Java runtime system is unable to find the referred class. Illegal access exception is thrown when you refer an object, class, variable, constructor or a method that is not accessible or private. Instantiation exception thrown when you try to create an instance of a class by using the new instance method, but the referred class cannot be instantiated. No such method exception is thrown when a particular method cannot be found. Unchecked exceptions. The unchecked exceptions occur because of programming errors. Therefore, the compiler does not force a programmer to handle these exceptions. Such errors should be handled by writing bug-free codes. However, there are times such situations cannot be eradicated. For example, in a calculator application, if you divide a number by 0, an unchecked exception is raised. There is some various unchecked exceptions and their causes of creation. Arithmetic exception occurs when you make an arithmetic error, such as dividing a number by 0. Array index out of bounds exception occurs when an attempt is made to access an array element beyond the index of the array. Array store exception occurs when you assign an element to an array that is not compatible with type of data that can be stored in that array. Class cast exception occurs when you assign a reference variable of a class to an incompatible reference variable of another class. Illegal argument exception occurs when you pass an argument of incompatible data types to a method. Negative array size exception occurs when you create an array with a negative size. Null pointer exception occurs when an application tries to use an object without allocating memory to it or calls a method of a null object.
Number format exception occurs when you want to convert a string in an incorrect format to a numeric format. Implementing exception handling. When an unexpected error occurs, Java creates an exception object. After creating the exception object, Java sends it to the program by throwing the exception. The exception object contains information about the type of error and the state of the program. When the exception occurred, you need to handle the exception by using an exception handler and processing the exception. Using the following keywords and blocks: try, catch, throws, finally, try with resources. अब हम इन कीवर्ड से एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं. Using try and catch blocks, a try block encloses the statements that might raise an exception and defines one or more exception handlers associated with it. If an exception is raised within the try block, the appropriate exception handler that is associated with the try block processes the exception. In Java, the catch block is used as an exception handler. A try block must have at least one catch block that follows the try block immediately. The catch block specifies the exception type that you need to catch. अब you can declare the try and catch block by using the following syntax. Try लिखेंगे, फिर उसमें हम कोड लिख देंगे, फिर उसके नीचे catch और exception and name of object और उसके अंदर कोड लिख देंगे, error handling code. In the preceding syntax, the catch block accepts the object of the throwable class or its subclass that refers to the exception caught as a parameter. When the exception is caught, the statements within the catch block are executed. Consider a scenario in which you need to accept two integers from a user, performs their addition and displays the result. For this you can use the following code. Scanner class import scanner करा हमने, फिर क्लास बनाई एडिशन नाम की, मेन मेथड लगाया, तीन वेरिएबल्स लिए इंट num1 num2 एंड रिजल्ट. स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, प्रिंट कराया, एंटर द फर्स्ट नंबर, num1 ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट लगा दिया, नेक्स्ट इंट का मेथड लगाया, प्रिंट करवाया, फिर हमने एंटर द सेकंड नंबर num2, इसमें भी नेक्स्ट इंट लगा दिया, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट, फिर हमने रिजल्ट में num1 प्लस num2 कर दिया, प्लस करवा दिया दोनों को, प्रिंट करवा दिया रिजल्ट को. अब while executing the preceding code, if the user provides an input other than an integer value, अब इसमें हमने num1 num2 में यूज़र से इनपुट मांगा, अगर वो num1 num2 में जब उससे इनपुट मांगा जाएगा उसमें अगर वो अल्फ़ाबेट डाल देगा तो वो एक एरर है. तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे कि अगर वो अल्फ़ाबेट डाल दे तो उसमें वो देखेंगे. इसमें an exception is raised and the program terminates abnormally बिहेव करेगा प्रोग्राम. To overcome this, you can implement exception handling in the preceding code by using the try catch block as shown in the following code. अब हम इसमें try catch block लगाएंगे कि अगर कभी कोई ऐसा यूज़र करे तो हम उसे try catch block लगा के कैसे हैंडल कर सकते हैं. कोड सेम है, बस हमने इसमें क्या करा, स्कैनर क्लास लगाया, हमने इसमें ट्राई मेथड ट्राई का लगा दिया, हमने इसमें ट्राई के अंदर वो कोड लिखा है जो हमने ऊपर लिखा हुआ था कि एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर नेक्स्ट इंट लगाया था हमने, फिर एंटर द सेकंड नंबर, फिर नेक्स्ट लगाया था num1 इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट कर दिया, num2 इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट एस num2 कर दिया, फिर रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2 कर दिया. ये हमने ट्राई के अंदर लिखा है. फिर हमने प्रिंट करवा दिया रिजल्ट को, फिर हमने सीधा लिख दिया कैच, उसमें लिख दिया एक्सेप्शन ई. अब उसमें हमने प्रिंट करवा दिया प्लीज़ इनपुट ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़. अगर हमारे ट्राई ब्लॉक जब हमारा एक्सेस हो रहा होगा, जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो हमने इस प्रोग्राम यूज़र से इनपुट मांगेगा num1, और जैसे ही यूज़र ने अगर num1 में अल्फ़ाबेट वैल्यू डाल दी तो वो सीधा कैच वाले कोड पे आ जाएगा, सीधा कैच पे एक्सेप्शन डाल देगा और कैच में जो भी हमने कोडिंग लिखी है वो उसके सामने प्रिंट हो जाएगी. हमने कैच में लिख रखा है प्लीज़ इनपुट ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़, तो यही प्रिंट होकर उसके सामने आ जाएगा. तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव नहीं करेगा, वो सीधा टर्मिनेट हो जाएगा नॉर्मल तरीके से. इन द प्रेसिडिंग कोड द ट्राई ब्लॉक इज़ यूज टू मॉनिटर द यूज़र इनपुट. इफ द यूज़र एंटर्स एन इनपुट दैट इज़ नॉट एन इंटीजर वैल्यू such as a char or a string, an exception is raised. However, the exception is successfully handled by the catch block.
that catches the exception raised in the try block. Once the exception is caught, the message "please input only numeric values" is displayed and the abnormal termination of the program is handled successfully. And there is some note. The parseInt method is a static method defined inside the integer wrapper class. It is used to convert a numeric string value such as 12 to an integer value. A try block can have multiple catch blocks. This is required when a code within the try block is capable of raising multiple exception. अब हम एक ट्राई के साथ कितने भी कैच का यूज कर सकते हैं कि अगर हमें लग रहा होगा कि इसमें मल्टीपल एक्सेप्शन आ सकते हैं. You can declare multiple catch blocks with a single try statement by using the following code snippet. ट्राई लिखेंगे, उसके अंदर जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी, जो भी हमारा कोड होगा वो लिख देंगे. फिर उसके नीचे हम एक्सेप्शन लगा के कैच लगा के हमने उसके नीचे कितने भी कैच लिख के उसके अंदर डिफरेंट एक्सेप्शन नेम डाल सकते हैं और डिफरेंट कैच में डिफरेंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं हम टू हैंडल द एक्सेप्शन. In the preceding code snippet, when the statements in the try block raise an exception, the matching catch block corresponding to the raised exception is executed. Further, the execution continues after the try catch block. While working with multiple catch statements, it is important to follow the exception hierarchy such that the subclasses must appear prior to the superclasses. If the exception hierarchy is not followed, a compile time error is generated. कंसिडर द फॉलोइंग कोड. क्लास बनाई डिवीज़न नाम की, मेन मेथड, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे हमने, इंट num1 num2 और इंट रिजल्ट. स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, स्कैनर ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ट्राई ब्लॉक लगा दिया हमने यहाँ पर, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर एंटर द सेकंड नंबर. हमने यूजर से सेकंड नंबर एंटर करवाया और रिजल्ट में लिख दिया इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2. अब हमने प्रिंट करवा दिया रिजल्ट को. अब कैच में लिखा हमने कैच एक्सेप्शन ई, कि अगर हमारी कोई एक्सेप्शन आती है तो ये वाला प्रिंट हो जाए, प्लीज़ इनपुट ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़. कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, ये दूसरा कैच है हमारा, इसमें हमने लिख दिया डिवीजन परफॉर्म्ड बाय 0. तो ये क्या एरर है. द प्रेसिडिंग कोड विल जनरेट अ कंपाइल टाइम एरर्स एज द एक्सेप्शन हायरार्की इज नॉट फॉलोड. Therefore, in the preceding code, arithmetic exception should be caught before exception. Second है throw. You can throw an exception explicitly by using the throw keyword. For example, you need to throw an exception when a user enters an incorrect login ID or a password. The throw keyword causes the termination of the normal flow of control of the Java code and stops the execution of the subsequent statements. The throw keyword transfers the control to the nearest catch block that handles the type of exception being thrown. If no appropriate catch block exists, the program terminates. You can throw an exception by using the following syntax: throw throwable object. In the preceding syntax, throwable object is an object of the throwable class or a subclass of the throwable class, such as an exception class. The throwable object is created by using the new operator. The Java compiler gives an error if the throwable object does not belong to a valid exception class. Consider the following code that demonstrates the implementation of the throw statement. Public class throw demo, void display, throw new runtime exception, main method, throw demo object 1 equals to new throw demo. ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया थ्रो डेमो का. ट्राई ब्लॉक लगाया ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले. कैच लगाया रन टाइम एक्सेप्शन ई, प्रिंट करवा दिया रन टाइम एक्सेप्शन रेज्ड. There is some note: an exception can be handled either in the method that raises the exception or in the calling method. In the preceding code, the statement throw new runtime exception is used to throw a runtime exception object, and the calling method main handles the exception raised in the display method. The throw keyword can also be used inside a catch block to rethrow an exception. Exceptions are rethrown if a method causing the error wants to pass the error handling responsibilities to the exception handlers in some other methods. You can use the following code snippet to rethrow an exception. Catch exception E, print करवा दिया exception raised, throw E. In the preceding code snippet, the exception goes to the catch block of the next higher context, ignoring the catch blocks of the same try block.
You can use the following code to catch the runtime exception and rethrow the exception to the outer handler. क्लास बनाई rethrow exception, static void compute method, try लगा दिया throw new runtime exception my exception, catch लगाया runtime exception e, print करवा दिया exception caught in compute method, throw e कर दिया, हमने e को throw कर दिया। फिर हमने main method बनाया, try लगा के compute method को कॉल करा, यहाँ पर कैच लगाया रन टाइम एक्सेप्शन ई, फिर प्रिंट करवा दिया हमने एक्सेप्शन कोड और ई को प्रिंट करवा दिया। इन द प्रेसिडिंग कोड द कैच ब्लॉक इन द कंप्यूट मेथड रिथ्रोज द रन टाइम एक्सेप्शन टू द कैच ब्लॉक डिफाइंड इन द मेन मेथड। तीसरा है थ्रोज। द थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड बाय अ मेथड टू स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस दैट द मेथड कैन थ्रो। If a method is capable of raising a checked exception that it does not handle, then the method must specify that the exception is handled by the calling method. This is done by using the throws keyword. The throws keyword lists the checked exceptions that a method can throw. You can use the following syntax to declare a method that specifies a throw keyword. Access specifier, modifier, return type, method name, argument list, throws लगाया हमने, फिर एक्सेप्शन लिस्ट। इन द प्रेसिडिंग सिंटैक्स एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर specifies the access specifier and modifier such as public and static respectively. Return type specifies the type of value returned by the method. Then method name specifies the name of the method. Argument list specifies the arguments that the method can accept, and throws exception list specifies the exceptions that the method can throw. Consider the following code that demonstrates the implementation of a throws statement. हमने क्लास बनाई throws demo नाम से, फिर void display throws exception throws कर दिया हमने, throw new exception। फिर हमने main method बनाया, object बनाया throws demo का, throws demo object1 equals to new throws demo। फिर try block लगा दिया हमने object1 dot display, फिर catch लगाया exception e, प्रिंट करवा दिया रन टाइम एक्सेप्शन रेज्ड। इन द प्रेसिडिंग कोड द डिस्प्ले मेथड डिक्लेयर्स दैट एन एक्सेप्शन क्लास exception can be generated. Therefore, the try catch blocks have been defined to catch the exception in the main method. Finally, during the exception execution of a Java program, when an exception is raised, the rest of the statements in the try block are ignored. Sometimes it is necessary to execute certain statements irrespective of whether an exception is raised. The finally block is used to execute this required statement. The statements specified in the finally block are executed after the control has left the try catch block. Finally block is used to execute this required statement. The statements specified in the finally block are executed after the control has left the try catch block. You can use the following syntax to declare the try and finally block. Try लगाया हमने, block of code लिख दिया, फिर हमने उसमें लगा दिया finally. Block of code that is always executed irrespective of an exception being raised. यानी कि exception raised होने के बाद भी ये execute होगा. In the preceding syntax, the try and the finally blocks are declared. If there is a catch block associated with the try block, the finally block is written after the catch block. अगर उसमें कैच ब्लॉक लगाएंगे तो हम फाइनली जो ब्लॉक लिख रखा हमने ट्राई के बाद वो कैच के बाद आएगा, यानी कि पहले ट्राई आएगा, फिर कैच आएगा, फिर फाइनली आएगा. द फॉलोइंग कोड स्निपेट शोज हाउ टू डिक्लेयर द ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स. ट्राई लिखा, फिर हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया, फिर उसमें कैच लगाया, एक्सेप्शन नेम ऑब्जेक्ट1 लिख दिया, प्रिंट करवा दिया जो भी एक्सेप्शन आएगा, फिर दूसरा कैच भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, एक्सेप्शन नेम टू ऑब्जेक्ट2, फिर उसमें प्रिंट करवा दिया, फिर हमारा फाइनली आएगा ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एन एक्सेप्शन बीइंग रेज्ड और नॉट. यानी कि अगर एक्सेप्शन आएगी तब भी वो एग्जीक्यूट होगा और अगर नहीं आएगी तब भी वो एग्जीक्यूट होगा. इन द प्रेसिडिंग कोड स्निपेट द ट्राई कैच एंड द फाइनली ब्लॉक आर डिक्लेयर्ड. द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट एन एक्सेप्शन इज रेज्ड. If an exception is raised, the finally block executes even if none of the catch blocks match the exception. अब next है हमारा try with resources. The try with resources statement is similar to the try block. However, it is essentially used to declare and automatically close the objects such as the file, streams, and database connection
after the execution of the try block finishes. Such objects are known as resources. In order to be handled by the try with resources statement, the resource must implement the java.lang.autoclosable interface. The try with resources block ensures that one or more system resources are released when they are no longer required. Consider the scenario where you are monitoring code that deals with the opening of a resource inside a try block. You have also specified the instructions to execute in the finally block. If the try block raises an exception, then the statements in the finally block are executed. In case if the finally block also encounters an exception, then the object will never be closed. In such a case, to make your application more efficient and deal with the improper resource management, the try with resources statement can be used. You can use the following syntax to declare the try with resources statement. Try resource declaration कर दिया हमने यहाँ पर, resource declaration n, मतलब कितने भी resource declaration कर देंगे हम यहाँ पर, फिर code लिखा to be executed, फिर उसके बाद after the try block the resource is closed. In the preceding syntax, multiple resources separated with can be declared with the try statement. Semicolon लगा के हम declare कर सकते हैं. The following code snippet shows how to implement the try with resources statement. Try buffered reader br equals to new buffered reader new file reader file path फिर return br dot read line. In the preceding code snippet, buffered reader is declared as a resource and is used to read data from a file provided at the location specified by file path. The class buffered reader is a built-in class that implements the java.lang.autoclosable interface. The preceding code snippet ensures that the BR instance of buffered reader is closed after the execution of the try block. You can also achieve the preceding result by specifying a finally block and including the statements to close the instance in it. However, using the try with resources statement reduces code and improves the readability of code. User-defined exceptions. In addition to the built-in exceptions, you can create customized exceptions as per the application requirements. To create a user-defined exception, you need to perform the following steps. Create an exception class. Implement user-defined exception. Creating an exception class. If you want to create a new user-defined exception, then the class should extend the throwable class or its subclasses. Consider the following code snippet. Public class age exception extends runtime exception. Public age exception print करवा दिया invalid value of for age exception लगाया string message super keyword लगा दिया हमने यहाँ पर. In the preceding code snippet, the age exception class is created. The age exception class extends runtime exception, which is a subclass of the exception class. The constructor of the age exception class prints the message to state that an invalid age value has been entered. In addition, it has an overloaded constructor which accepts string objects. Implementing user-defined exception. Consider the following code to demonstrate the implementation of a user-defined exception. Import java.util.star. Public class validate age क्लास बना दिया हमने. मेन मेथड लगाया मेन स्ट्रिंग args. int age वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर obj1 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. फिर प्रिंट करवाया हमने एंटर द एज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट1 डॉट नेक्स्ट इंट. यूज़र ने एज डाल दी. इफ़ एज इज़ स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 0 फिर ट्राई लगेगा थ्रो न्यू एज एक्सेप्शन. तो हमारा सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा एंड एज एंटर्ड इज़ जो यूज़र ने एज डाली होगी वो. In the preceding code, if the entered age is less than or equal to 0, the user-defined exception age exception is thrown. When the exception is thrown, the constructor defined in the class that of the user-defined exception is invoked, and the invalid value for age message is displayed. For example, when the age is specified as 12, यानी कि अगर यूज़र ने 12 एज डाली है, the following output is raised, age entered is 12. ये प्रिंट होके आ जाएगा. When the age is specified as 0, अगर यूज़र ने 0 वैल्यू डाल दी तो the following code is displayed.
इनवैलिड वैल्यू फॉर एज, एक्सेप्शन रेंज, ये दोनों प्रिंट होके आ जाएंगे। यूजिंग द assert कीवर्ड, assertion are statements in Java that enables you to test any assumption that you make regarding a program during its execution. The assumptions in the program can be simple facts, such as the range of a number should be between 10 and 20, or a number cannot be greater than 100. For example, in an application that computes interest, you are certain that the time period cannot be less than or equal to 0. In such a scenario, you can use an assertion to validate your code and confirm that your application does not use an incorrect value for the time period. You can implement assertion by using the assert keyword provided in Java. Understanding assertion. Assertions are used during the testing of a program. They enable you to test the assumption made in a program during its execution. For example, a particular program may require the value being passed to a method to be positive. You can test this by assertion that the value being passed to that particular method is greater than 0 by using an assert keyword. Assertions in Java provide the following benefits. First is, by using assertion, data can be validated easily. For example, in a method that performs division, you can use an assertion that validates at runtime if that method is performing division by 0. Second is, by using assertions, you can confirm whether the program is working as expected. Third is, by using assertions, the task of debugging is simplified as assertion can easily indicate the source and the reason for an error. Implementing assertions. The assert keyword is used to implement assertion. You can declare an assertion by using the following syntax. Syntax है assert expression A. There is something to note. Before you can successfully implement assertions in your code, you need to enable them in the Java environment. In the preceding syntax, expression A is a boolean expression, यानी कि true or false boolean value होती है. During the execution of a program, expression A in the assert statement is tested. If expression A returns true, then first is the assertion made in the program is true. Second is the program execution continues uninterruptedly. Third is no action takes place. However, if expression A returns false, then the assertion made in the program fails. The program throws an assertion error object and the program execution terminates. Consider the following code. Public class validate age नाम की क्लास है. मेन मेथड बनाया static void main string args. फिर int age वेरिएबल डिक्लेयर करिए. int age स्कैनर की ऑब्जेक्ट बनाया. स्कैनर obj1 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. फिर प्रिंट करवाया हमने एंटर द एज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट वन डॉट नेक्स्ट इंट. यूज़र से एज ली, मतलब एज का इनपुट मांगा. assert age is greater than 0 and age is less than 130. system.out.println the entered age is plus age. यानी कि एंड का मतलब होता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए. ये जो एंड के अगल बगल जो लेफ्ट और राइट में जो ब्रैकेट लिखे हुए हैं, एज इज़ ग्रेटर दैन 0 ये भी ट्रू होना चाहिए, और एज इज स्मॉलर देन 130 ये भी ट्रू होना चाहिए. जब जाके ये प्रिंट होगा द एंटर्ड एज इज प्लस एज. इन द प्रेसिडिंग कोड एन assertion is placed to check that the value of age is greater than 0 but less than 130. While executing the code, if the value of the variable age is less than or equal to 0 or greater than 130, the program terminates with the following assertion error. अगर 0 से नीचे की वैल्यू होगी या फिर 130 से ऊपर की वैल्यू होगी तो वो फॉल्स हो जाएगा और ये प्रिंट होगा exception in thread main java.long.assertion error. You can also declare assertion by using the following syntax: assert expression1 colon expression2. In the preceding syntax, expression1 is a boolean expression and expression2 is an error message value that is displayed if the assertion fails. Expression2 is passed to the constructor of the assertion error class. If expression1 returns false, the assertion error constructor converts the value in expression2 into a string format and displays the
Message if the assertion fails.